आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है और ये हायर क्लास में आता है। तो दिस चैप्टर इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर से शुरू करने से पहले हम थोड़ा टर्म को जानना चाहिए। तो सीक्वेंस क्या होता है, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, इस सबको आपको एक बाय एक समझाऊंगा मैं। पहले सीक्वेंस से बोलो। नंबर्स आर अरेंज्ड in a definite order followed by a certain pattern. Like suppose एक pattern दिया है an equal to 2n plus 1. If you put a1 first term, that is 2 into 1 plus 1, that is equal to 3. Similarly a2, instead of n you can put 2 into 2 plus 1, that is 5. Similarly a3, 2 into 3 plus 1 equal to 7. So this is called what? A sequence. 3, 5, 7 ऐसे these numbers are called what? Sequence. Each number is called what? Terms of the sequence. This is the first term, second term, third term, terms of the sequence. If this sequence is connected with a plus or minus sign, this is called what? Series. Like 3 plus 5 plus 7 dot dot dot, this is called what? A series. When a series is called a progression, so follow, see progression क्या होता है? If this series follows certain pattern, like जैसे 3, 5, 7, next is what? 9, next 11, this follows certain pattern. It's called what? Progression. Suppose 2, 4, 8, 16, this is followed a pattern. This is also called a progression. So different types of progression is there. One is arithmetical progression, geometric progression, harmonic progression. So but today we will discuss about arithmetical progression. How do you know this is arithmetical? How do you know this is geometric progression? So arithmetical progression में क्या होता है? तो common difference same होता है। जैसे common difference क्या होता है सर? ना सर 5 minus 3, second minus 5, 5 minus 3 2, third minus second, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2. तो common difference same, so it is in AP. Here 4 divided 2. Common ratio is same. 8 divided 4 2, 16 divided 8 is 2. So common ratio is same, so it is in GP. But today we will discuss about only arithmetical progression. This is first term, second term, third term, fourth term, fifth, sixth term कैसे निकलेंगे? तो जो common difference है इसको just add कर लो. 11 plus 2 13 ऐसे add करके चलना है। से आपको तो ये AP मिल जाएगी। जो सीरीज मिलता है इसको बोलते हैं क्या? AP. Okay, so how do you know this is first term? Let it be suppose first term is A. तो next common difference is what? D. add करो D. second term आपको मिल जाएंगे A plus D. Similarly again add D, we will get the third terms A plus 2D. Similarly again add D, A plus 3D, like this. But so in this pattern we'll find certain rule. जैसे see, so जैसे first term 0D होता है, सेकेंड टर्म 1D होता है, थर्ड टर्म 2D होता है, फोर्थ टर्म 3D होता है। इसलिए ऐसे जो अगर जाएंगे तो nth टर्म क्या होगा ना, एक कम होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे सेकेंड थर्ड टर्म क्या होता है, एक कम होता है 2D होता है, फोर्थ टर्म एक कम होता है 3D होता है। सिमिलरली nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? जनरल टर्म. ओके, so general, remember this is important thing, general term. Any term you can find by using this rule. An equal to a plus n minus 1 into d. This is called what? General term. So suppose a series is given 1 5 9 13 like this. So this the first term is 1. Term number always a natural number. First term is 1, second term is what? 5, third term is 9. Term number, I am telling what? Term number. Term number always a natural number. So fourth term 13. तो next term कैसे निकलेंगे? तो ऐसे D को ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से मिलता है। बट वी हैव टू डू using these rules, using this formula. Suppose you want to find fourth term, so A4 means instead of n you can put 4. So first term A is what? First term A is
first term, n is term number, and d is what? Common difference. So put करो, तो first term is here 1 plus n minus 1. N is what? I want to find fourth term, so 4 minus 1 into d. D is what? Second term minus 5. Remember, d always second minus first, third minus second, fourth minus third. It's a conjugative का difference. तो d is what? 4. तो 1 plus 4 minus 1 is 3. 3 4 जा 12. 12 plus 1 13. Yes, coming fourth term is 13. So similarly any term, suppose you want to find 100th term. 100th term कैसे निकालेंगे? a 100. तो पुट करो जैसे फार्मूला a is 1 plus n is what? 100. 100 minus 1 into d is what? 5 minus 1 4. तो 1 plus 100 minus 90 9 into 4. So 396 plus 1, so 397. Yes, you can find any terms. So by using this is formula. So next we'll discuss lot of questions regarding this. See, एक सीरीज दिए है √3, √12, √27, √48. देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? अक्सर बच्चों ये रूट को देखकर घबरा जाते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सी √3, तो √3 होता है, √12 मेक इट प्राइम फैक्टर. रूट मीन्स आउट ऑफ 2 एग्जैक्ट नंबर यू कैन टेक 1. सो 2 6 2 3. आउट ऑफ 2 एग्जैक्ट नंबर यू कैन टेक 1. सो 2 √3. Similarly, √27, 3 9 3 3. Out of 2 exact number you can take 1. So 3 √3. Similarly, √48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3. Out of 2 exact number you can take 1. 2 into 2 4 √3. Then what is the common difference? Common difference कैसे निकलते हैं? The second term minus first term. तो second term क्या है? a2. a2 is what? 2 √3. a1 is what? √3. So difference करो, 2 √3 minus √3. कैसे सबट्रैक्ट? ये जैसे लाइक टर्म होता है ना, 2x minus x कैसे होता है? x. Similarly 2 √3 minus 1 √3 is what? √3. Similarly third term minus second term, ये भी कर सकते हैं. As it is AP, so all the common difference should be same. So now d is what? √3. So another variety of question, see, find the nth term of this AP. Nth term of AP is given. That means an is given 7n plus 4. Find the common difference. So first we will find, इसे सीक्वेंस है, रूल लिखा है, तो a1 a2 a3 निकालो इसे. a1 क्या होगा? Instead of n you can put 1. तो 7 into 1 plus 4. तो 7 plus 4 11. Similarly a2 क्या होता है? Instead of n you can put 2. 7 into 2 plus 4 14 plus 4 18. तो d क्या होता है? d is what? a2 minus a1. So 18, a1 is 11, that is equal to 7. So good, common difference is 7. So similarly we'll do next question. See, if this common difference, let's one concept here, if d is greater than 0, then the series is what? Increasing order. Like suppose they say 2 4 6, they say d is 4 minus 2 2. Common difference is d is more than 0, so it is increasing order. If d is less than 0, like suppose 8 4 6 4 like this. So common difference कैसे निकलते हैं? 6 minus 8 minus 2. If common difference is less than 0, the series is decreasing order. One more important thing is here. So if d equal to 0, then what happen? The same term will repeat again and again. Like suppose 2 2 2. So d is what? 0. So it says this is also in AP, but each term is same. Okay. So this is the concept. So listen. One question is given here, the 14th term from the end of this AP. ऐसे AP दे दिया है -11 -8 -5 डॉट 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 49. एंड से 15th term 14th. So 2 ways is here. We can do this sum in 2 ways. So first of all, easiest way is what? Is just the last one is what? Last term is your first term, because starting from end, so last term is what?
फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 49। तो d कैसे निकालेंगे? तो d क्या होता है? जैसे नॉर्मल अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, अगर रिवर्स आएंगे तो फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसे। तो d इज व्हाट? -11 माइनस व्हाट? -8। तो -11 प्लस 8 दैट इक्वल टू -3। सो रिमेंबर, अगर फॉरवर्ड आएंगे तो d सेकंड माइनस फर्स्ट आता है, एंड में आएंगे तो फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसे। दिस वन माइनस दिस वन, ओके। तो हियर d is what? -3, then find 14th term. So a 14, so put the formula general term क्या होता है ना? a plus n minus 1 into d, a is first term is 49 plus n 14th term 14 minus 1 into d is what? -3. तो 49 plus 14 minus 1 13 into -3 -39, okay. So 49 minus 1, that is 10. Got it? So this is one variety of question from end. So similarly, agar ये two ways is there. So one example given here. See, suppose one series is given. I am telling here 1, 3, 5, and 7, 9. So n to second term, from n to second term क्या होता है? 7. How do you know? Total term is what? 1, 2, 3, 4, 5. तो second term, so 5 minus 2 you have to convert into from the beginning. You have to convert from the beginning. कैसे beginning को convert करती है? देखो, total term is what? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 minus second term 5 minus 2 plus 1 क्या होता है? देखो, 5 minus 1 5 minus 2 3 plus 1 फोर्थ टर्म 1 2 3 4 ऐसे। सो इजीली यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड से करेंगे और बिगिनिंग भी कर सकते हैं अपने, ओके। सो सेकेंड नंबर, सी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AP is given 293, 285, 277, 53 नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू, सेकेंड टर्म का वैल्यू, थर्ड टर्म का वैल्यू, जैसे लास्ट टर्म का वैल्यू ये होता है, तो ये लास्ट टर्म का जो वैल्यू होता है, तो अगर लास्ट टर्म आपको मिल जाएंगे तो टोटल टर्म आपको पता चल गया। देखो, सो दिस इज लास्ट टर्म कैसे निकलते हैं? लेट इट बी nth टर्म, सो an इज व्हाट? 53। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो an क्या फॉर्मूला होता है बोलो? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज गिवन 53। a इज व्हाट? फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 293 प्लस n is what? I don't know n because we want to find n minus 1 into d. तो d कैसे चलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 285 minus 293, so 293 minus 285, 13 minus 5 8, so bigger number is what? Minus, so minus 8, that is equal to 53. So 293 minus apply distributive property, minus 8n plus 8 equal to 53. So 293 plus 8 301 minus 8n equal to 53। कैसे सॉल्व करेंगे? 8n उधर ले जाओ, तो 8n equal to 301 minus 53, 11 minus 3 8, 9 minus 5 4, 248. So 8n equal to 248, then n equal to 248 divided by 8. So total number of term is what? 31. So इसे हम और भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये one by one we'll see. The last variety of question. So in general term के जो बारे में जो क्वेश्चन है, इसका लास्ट वेराइटी क्वेश्चन है। See, determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. First, I don't know the first term, I don't know the common difference. So how can you find the AP? Let the first term be, let the first term is what? A. First term is A and common difference is D. Assume, let us assume first term is A and common difference is D. So two unknown,
So it must be required 2 equation. So first equation is given, whose third term is given 5. It is given third term in general term, जो भी टर्म आप निकलना चाहते हो तो थर्ड टर्म क्या होता है, a3 क्या होता है ना सर, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, n इज व्हाट 3 माइनस 1 इंटू d, दिस इज गिवन व्हाट 5, दैट मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 1. Similarly, seventh term is given 9. How to find the seventh term? See, a7. Instead of n, you can put 7. General term. Any term when you find, so you follow the general term. General term क्या होता है? an equal to a plus n minus 1 into d. So seventh term a plus 7 minus 1 into d. That is given what? 9. So a plus 6d equal to 9. This is another equation. By solving these two equations simultaneously, you know how to solve. So let's see how to solve these two pair of equation. So a plus 6d is 9. Another is a plus 2d equal to 5. How to solve? So by elimination method you can solve it. So elimination means lower sign should be changed. Plus a minus a cancel, 6d minus 2d, so 4d equal to 9 minus 5 is 4, then d equal to 1. Got it? Similarly, putting the value of d in either of the equation, you will get the a value. So here a plus 6d equal to 9, so d is equal to 1, so a plus 6 into 1 6 equal to 9, so a equal to 9 minus 6 is 3. So first term and common difference will get, then you have to find the AP. तो AP means series, आपको series बनाना है. तो first term is 3, just add the common difference. Common difference is 1, second term क्या 3 plus 1 4, next 4 plus 1 5, 5 plus 1 6 dot 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 dot. So this is the final answer. Got it? So listen. So ये जो होता है ना, जो AP का दो पार्ट होता है, एक होता है जनरल टर्म, अनदर इज व्हाट, इट्स सम. दो पार्ट जस्ट. सो एक पार्ट हमने अभी डिस्कस कर लिए, जो जनरल टर्म, जो भी टर्म आपको चाहिए वो निकल सकते हैं अभी. सो कमिंग क्लास में हम सम निकालेंगे. सो बिफोर दैट आई एम गिविंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू डू योर होमवर्क. ओके, सो आई एम राइटिंग 5 to 10 क्वेश्चंस, सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इतने ही आप प्रैक्टिस कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हम लेकर आप देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए इसको अच्छे तरह प्रैक्टिस करो, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन में आपको देने वाला है. सो एवरी क्लास यू हैव टू अटेंड. इसके बाद हम जो कमिंग क्लास आते हैं, इसको सम ऑफ एन टर्म्स, ये था जनरल टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स निकाले दो पार्ट, और अच्छे तरफ से हमको आपको ख़त्म करेंगे. सो सुनिए, अगर ये चैनल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.